I'm going to Sonepur in Bihar that hosts India's oldest and most popular animal fair. It is believed that the great emperor Chandragupta Maurya used to buy his war animals from this very fair. The state of Bihar remains an enigma for most of the country, where on the one hand it connects us to the pride of India's past, on the other it has today become synonymous with poverty and backwardness. But there are certain things that you just cannot deny about Bihar. And the annual Sonepur Mela is one of them, as it is both a celebration of and a journey through the heart and soul of this unique state. Situated as it is at the confluence of the mighty Ganga and the Gandak, Sonepur is a small sleepy town 30 kilometers away from the capital Patna. I reached the town close to daybreak, when devotees are ready to begin their day with a dip in the river. Although not an ardent believer in the power of holy dips, I decide that the best way to understand the significance of a famous fair is by doing what every visitor to the fair does. Besides, for me, this is also a good time to encash the rain check that I've been carrying with me since I missed the big dip at the Mahakumbh. A lot of people come here for the Kartik Purnima Snan, with which the Mela officially opens. Even though I've been covering a lot of fairs, I missed my great opportunity for a holy dip at the Mahakumbh. So this is where I make up for that big loss. After a highly invigorating bath at the Ghat, I proceed to pay my respects at the Hariharnath Mandir. Now this is no ordinary temple. In fact, it wouldn't be too much of a stretch to say that this temple is as old as the beginning of time. As legend has it, Vishnu himself had come down to save his devotee from an enemy. And thus the temple commemorates this otherworldly event. एक शाम भोजन के लिए आपके नाम पर आटा घी आएगा, भोग लगेगा। कितना खीर क्या निकाल रहे हैं, क्या होगा? कितना बताइए आप फिर? एक शाम भोजन। Like most temples in northern India, this one too is a place for devotees to express their deepest faith. As much as it is for pundits and priests to convince you of the investment that you're making for yourself in the afterlife. And like any other visitor to the temple, I too was convinced of relieving the monetary baggage that I was carrying in my wallet.
The Hariharnath temple is closely associated to the Sonepur Mela because it's believed that Vishnu personally intervened once when his devotee, his very loyal devotee, was caught by his enemy. Incidentally, the enemy was a crocodile whom Vishnu slayed, thus releasing him from the cycles of birth and rebirth. The Sonepur Mela has been traditionally known as a place where exotic animals are bought and sold. And one of the most prized of these exotic creatures is the largest of all land animals, the elephant. वाह। हम लोग साल में एक बार यहाँ आते हैं कार्तिक के पूर्णिमा के रोज। ये मेला प्राचीन काल का मेला है। एक नारायणी नदी है यहाँ। इस नदी में प्राचीन काल का बात है, गज को ग्रह ने पकड़ लिया था। इसने नारायण को याद किया था। नारायण भगवान पहुंचे थे यहाँ और प्रगट होकर के इसका रक्षा किए थे और बचाए थे। इसीलिए इसका नाम उस पार में जो नदी के तट में घाट जो है, कोनहारा घाट, इसी के नाम से जो है प्रसिद्ध है। उसी जमाने से यहाँ मेला लगता है। जितने जानवर हैं उससे सबसे पूजनीय जानवर है और बुद्धिमान जानवर है। ये सब सामने में देखिए, इसका जो भी कहिए सब करेगा। बुद्धिमानता की इसकी कैसी उसका उदाहरण बताइए कैसे? एकदम अभी उदाहरण दे देते हैं। जिसको ये खिलाता पिलाता है, अगर उसको कुछ भी हो गया तो ये कैसे उसको देखता है, उसको देख लीजिए सामने में। देखिए सामने में बुद्धि है कि नहीं उसको। क्या बात करते हैं? देखिए वो बुझा कीजिए, इसको कोई मार के गिरा नहीं। वाह, क्या बात है। I was to discover a quaint system of buying and selling elephants here. One that I was told is as old as the Mela itself. Sellers cover their hands with a cloth and the buyers pick up fingers. And the bigger the number of fingers picked, the bigger the quantum of sale. This, I was told, is a way of ensuring that the deal remains confidential and the prices do not become a casualty of inflationary pressures. अपना नाम बताइए। धीरज। धीरज। धीरज के नाम से चलिए जी पारे जी। धीरज के नाम से वो पत्रिका देखिए तो इनके भाग्य नक्षत्र समय क्या है, क्या चल रहा है धीरज जी का। कौन है? धीरज जी का नाम से है पूरा। हाँ जा देखिए धीरज जी आपका नाम है, आपका राशि धनु राशि, आपका राशि का स्वामी बृहस्पति महाराज। जो कार्य तुमने सोचे हैं वह कार्य बहुत जल्द ही पूरा होंगे। उच्च पदवी के भी प्राप्त होंगे। हर कार्य में आपकी सफलता के प्राप्त होंगे। राजनीतिक कार्यों में सफलता मिलेंगे। While history and the Sonepur Mela have had a long association, today it has grown to include aspects of modern technology.
as microphones and speakers dominate this rural fair. ब्रासलेट लीजिएगा 10 रुपया, मूछ काटने वाला कैंची लीजिएगा वो भी 10 रुपया, चाबेडिंग लीजिएगा 10 रुपया, मंगलसूत्र लीजिएगा 10 रुपया, हेयर बैंड लीजिएगा 10 रुपया, चाकू लीजिएगा 10 रुपया, हिन्ना लीजिएगा 10 रुपया। क्या दिखाते हो यहाँ पे? But magic is one thing that hasn't changed over the years. And so I wander into a tent that looks promising. लड़की नागिन बनती है। ओह, तो वो साक्षात दिखाई देता है। वाओ। और फिर वापस लड़की में बदल जाती है। वापस लड़की में बदल जाती है। कब शुरू होगा ये शो? तो ये जादू है कि हाथ की सफाई? नहीं, जादू नहीं है, मशीन के द्वारा। मशीन के द्वारा। मशीन यानी कि फोटोस्टैट, ये एक्सरे मशीन। मशीन द्वारा लड़की को नागिन बनाया जाता है। नागिन के बनाया जाता है। हाँ हाँ। फिर जैसे रहेगा लड़की उसी को बनाया जाता है। ओह, कौन सी मशीन है? अभी आए? I am told that the machine that changes a girl into a snake woman has gone for मशीन खराब repairs हो to गया था। Patna. अच्छा, तो बनवाने लेके गया है। और आएगा कब? So I move on to try some of the other attractions of the Mela. लाल जो होता है अंदर से। तो यहाँ से लोग खरीद के लेके जाते हैं और अपने घर में यहीं पे लगाते हैं। तो हर साल आते हो? ओके, कहाँ से आते हो? हाजी छुई मुई का पेड़ है। इसको छू के फोटो खींचने हेलो, जादूगर श्वेता शर्मा का प्रोग्राम 12 बजे से चालू होने जा रहा है सर। And then I find a real magician's corner, where I also get a chance to make my own version of an impromptu ad. हेलो हेलो हेलो, शर्मा जी का स्पेशल जादू। हेलो हेलो हेलो, आइए माताओं, बहनों, भाइयों, शर्मा जी का जादू आइए देखिए। हेलो हेलो हेलो। मैं जेपी शर्मा आपका स्वागत करते हैं और मेरे मंच पर, मेरे कैंप में आपका हार्दिक स्वागत है। The magician turns out to be the biggest surprise of all. For not only is he a true son of the soil, his story is one of an extreme comeback. मेरे पास एक ये ड्रॉ है, खाली है। 1 2 कम। चलो इसको निकालो। ओके, चलिए। हम 2001 में एक हादसा हुई, घटना घटी और हम पर एक अटैक किया। उन लोगों ने जो राजनीति को धर्म के साथ जोड़कर करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए हम जो आंदोलन साइंस सुपर मिराकिल चमत्कार का विज्ञान के Vinod Sharma tells me that he lost his sight in a bomb attack while he was campaigning for his politician wife. और इसके लेकर ही एक ग्राउंड बनाया गया चुनाव में ही हम पर बम अटैक हुआ और मैं जला। पटना पीएमसी में मेरी इलाज हुई, गलत इलाज हुई, जिसके कारण रोशनी चली गई। एम्स में 5 साल तक मैं However, Sharma did not lose hope and he made a determined comeback to the world of magic. This time as an evangelist for the cause of science rather than the world of magic alone. ब्रेन है, मस्तिष्क की उपज है और हम ये कर सकते हैं। आपका हमारा जो सेल्फ, The loss of eyesight and a few fingers may have hampered the ease of doing magic tricks, but Sharma ji's spirit is worth applauding. ये सोनपुर की मिठाई है। खोया इसमें सोनपुर की मशहूर है। कहाँ है आपकी दुकान? हरिद्वार जिला। Not too far from Vinod Sharma's magic tent is the bird market.
This name, however, tells you only half the story, because this market has other surprises too. Come here to the Chidiya Bazaar especially to buy these exotic and not so exotic birds. But they're not just birds alone, there are also other mammals that are on display. कितना बड़ा बच्चा है ये? भूरा वाला. So cute. So as much as the Sonepur Mela is known for bigger mammals like elephants and horses, they also have these small creatures, birds of different feathers, and dogs and guinea pigs and little rabbits over here. This one is a hare, I think. Cute, isn't it? कितनी एज है इसकी? कितने 200 का है? कितना बड़ा? कितनी उम्र है? 1 महीने का है, 1 हफ्ते का है, कितने का है? 1 महीने का. It's a 1-month-old hare. This, for example, is a myna. It's known to mimic human sounds. It can actually cry out like a human being. This, of course, is a lovebird. Bajrigas, they're called in English. इसको क्या बोलते हो? Lovebird. It's one very common pet in India, and especially in this area, I think people have a love for Bajrigas. This is a Saint Bernard who's about 8 months old. When he's an adult, he goes to the size of a small calf or a donkey. इसको गर्मी लगती होगी यहाँ पे, नहीं? इसका मौसम जो है जहाँ से आया है, धूप के वजह से इसको नहीं निकालते हम लोग. हाँ, ये तो बहुत ठंडे मुल्क से आया ना, यूरोप से. तो इसको रखने के लिए तो बहुत एसी वैसी चाहिए होगा. तुम कहाँ रखते हो उसको? हम लोग रखते हैं एकदम ठंडे जगह. रूम में रखते हैं. कहाँ से आया? पटना से. Another animal whose backstory in India's history of warfare is uncontested and therefore cast in stone is the horse. Even as far back as the Vedic times, the horse meant kingly glory and majesty. The Ashwamedh Yagya was carried out by a conqueror to extend the boundaries of his kingdom. And so he let his horse loose, and whoever stopped it did so at the peril of taking on the king's army. तो एक महीने पर एक दांत होता है क्या? ओके, और दांत बढ़ेगा तो मतलब और उम्र होगा. But while there's no Ashwamedh Yagya happening here, this is one of India's oldest markets for war animals. Going back to the time of the mighty Mauryan Empire, whose foundation was laid by Chandragupta Maurya and his famous minister Chanakya. So much of the sentiments attached to the animals here come from the history of the Mela. इस पे बैठते भी, सवारी करते हो? नहीं, अभी नहीं. अभी तो बच्चा 6 महीने का बच्चा है, दूध पीती है. सवारी कब से कर सकते हैं? अभी 6 महीने के बाद. 1 साल का जब हो जाए ना, 6 महीने के बाद. अच्छा, 6 महीने से. 6 महीने के बाद. लेकिन यही सवारी करेगा कि हाँ, बड़ा आदमी भी कर सकता है? यही बड़ा आदमी नहीं कर अभी तो बड़ा वाला वहाँ है तूफान, चढ़ता है इस पर. अच्छा, जाके तूफान के देख लीजिए. I met Tufan, a frisky young champion who has won several shields and trophies in the races held during the Sonepur Mela. नहीं, छुई कोई दिक्कत नहीं. छुई कोई दिक्कत नहीं. ये क्या कर रहा हूँ? इसका क्या खासियत है? बहुत तेज दौड़ता है. कितनी स्पीड से दौड़ता है? 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा. तुम्हारी क्या एज है? 10 है. और तूफान का? जवान होने वाला है. कब होगा जवान? ये काट लेता है. क्या खेल रहा है ये? Actually, not too long ago, the Maharajas of various North Indian kingdoms also came here to buy their rides. And such was the reputation of the Sonepur Mela that they all went back more than satisfied.
Khan Baba told me how things were when he first came to Sonepur half a century back. जब पहली बार आप आए थे तो क्या नज़ारा था यहाँ पे सोनपुर मेले का, क्या माहौल था? नज़र ये आता रहा कि पहले हाथी बहुत सा आता रहा, यहाँ से बहुत तमाम भर जाता रहा, पूरा क्षेत्र भर जाता था पूरा हाथियों से। क्षेत्र भर जाता रहा, लाइन से कायदे से सब हाथी रहता रहा, बगल में हाथी बीच में रोड रहता रहा, और आसाम जंगल से हाथी बाज होता रहा, वो भी नए बाज का भी हाथी आता रहा, और राजा महाराजा लोग भी आते रहे, वो लोग हाथी भी खरीद कर ले जाते रहे, और हर एक सुविधा रहता रहा, और यहाँ इंतजाम अच्छा रहता रहा, इसलिए कि माहौल भी रहता रहा सरकारी सब, उसके लिए हाथी को चैन वगैरह बांधने के लिए बल्लम बरछा सब, जो जिसको उस घड़ी दवा नहीं था तो ये नहीं चालू, तो वो लोग कोई हाथी अगर ये हो जाए तो वो लोग कंट्रोल करते थे, इसीलिए शौक ही अपना जल जुलूस में घुमाते रहे लोग। एक एक रियासत में 10 हाथी, 20 हाथी, 50 हाथी रहता रहा। During the month-long Mela, the bank of the river Gandak sees this sight every morning. For a city dweller like me, this has a definite resonance. It is like being at a car wash. But the big difference is that here, the vehicle responds with so much obvious pleasure that I stay and watch captivated. It makes me think about how close elephants are to us humans. The elephant is a very knowing and sentient creature. And like all knowing and sentient creatures, it likes the good life, especially the early morning scrub. So the mahouts from the nearby Hathi Bazaar get their elephants here for their morning bath, and they, along with the other bathers at the ghat, have a whale of a time. The Mela is not just for animal buyers and sellers, but it also attracts artists, photographers and filmmakers from all over the world. There's something quite fulfilling about finding such an improbable mix of animals and humans. No wonder it's captured the imagination of artists like Mehdi Shaw. यहाँ जो गांव है सारे, उसमें जब मार्केट ही नहीं होती थी, बड़ी बड़ी मार्केट जो आज मॉल खुल गए हैं यहाँ, तो वो नहीं होता था, तो साल भर लोग ये इंतज़ार करते थे कि कब होएगा मुझे मेला? ये कब मौका मिले कि हम मेला लगे और उसमें जाएं और हम उसमें तरह तरह की चीज़ें लें। तो ये साल भर लोग इंतज़ार करते हैं इस मेले के लिए। लेकिन अगर आपको पेंट करना हो मेले की कोई इमेज, तो वो कैसी आप पेंट करेंगे? जाहिर है कि मेले की इमेज जो है आम तौर पे जो यहाँ दिखाई देता है उसमें एनिमल्स है, जो मैंने पेंट भी किया है, एनिमल्स है, और लोग सैर व तफरीह करते हुए, ख़रीदते हुए, ये सब होगा। झूले हैं जो सिंबलिक है, फिर यहाँ की सीटी, और वो एक घिरनैया होती है मट्टी की, टेराकोटा आर्ट, तो वो चीज़ जो है यहाँ की मशहूर है। ओ माझी रे चला चली नदिया के पार, हो चला चली नदिया के पार, हो। One of my most unforgettable sights happened here on the river, when I spotted just for a few seconds the somersaulting form of a now rare gangetic dolphin. I asked the boatman what it was, and he told me it was a sons gharial, which is what the locals call the dolphin. Unfortunately, we couldn't capture the amazing creature for you in our camera. Now I'm going to the other side to look at another unique aspect of the Mela. One of the must-see places if you've come for the Sonepur Mela is the Nepali Mandir, and it brings the architecture of the Himalayan kingdom down to the Indo-Gangetic plains. The Nepali Mandir is a fascinating structure, especially for these baths.
Built somewhere in the 18th century, the temple, though not directly associated with the Sonepur Mela, is a must-see. Especially if you, like me, like to imagine the history of a place through its architecture. This 18th century temple stands out as an oddity in the area because of its unique construction style. It's built like a pagoda, and it has some really intensely erotic wooden carvings on its outer awnings. As evening descends, the Mela area starts to bustle with a different kind of energy. The lights come on and families who have been busy during the day begin to make their way to the venue. तुमने बनाया इसको? तुमने बनाया? किसने बनाया? गांव में मिट्टी का है ये। नमस्कार, आप 72 किलो है। आप सभी कार्य ध्यान पूर्वक करते हैं, आपको कष्ट कभी नहीं होगा। नमस्कार, आप 90 किलो हैं। आप धार्मिक विचार के हैं, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। नमस्कार। आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, आपकी जिंदगी अच्छी बीतेगी, फिक्र न करें। आप तंदुरुस्त व्यक्ति हैं, आपका दिमाग तेज है, आप साहसी व्यक्ति हैं, लोग आपका आदर करते हैं, आप अधिक बुद्धिमान हैं, परिश्रम को न छोड़ें, आपका परिवार भी बुद्धिशाली होगा। आप दिल के सच्चे हैं, पर लोगों को विश्वास नहीं होता। नमस्कार। This is also when the roadside chulhas get ready to make Bihar's favorite fast food. I, along with some photographer friends who I'd met earlier in the day, get ourselves invited for a sampling of this hugely popular dish. And what's more, we discover a cousin dish the famous Bihari litti has in faraway Australia. Very, very nice. A bit like our damper we make in Australia. Like what? Like damper. Oh. We make big damper. Oh, and what goes inside it? Just flour and water. Okay. Just flour and water. So very similar. Wow. ये बता रहे हैं इनके देश में भी ऐसे ही बनाते हैं। लिट्टी जैसा एक चीज़ होता है, उसको आटे से ही बनाते हैं। Make it with flour. Make flour and water and mix it up and put on a fire as well. हाँ, आग के ऊपर ऐसे ही उसको सेकते हैं, जैसे आप बना रहे हैं। And then how do you have it? Slightly bigger. Cut it open and Okay. put some butter on it. Okay. इसको काटते हैं, फिर जब पक जाता है उसके ऊपर मक्खन लगाते हैं। Then? No butter, just you eat it whole. Oh, okay. Just eat it मक्खन लगा के उसको ऐसे ही खा लेते हैं। इनके देश में ऐसा होता है, वो बता रहे हैं। Debbie, how do you like it? It's delicious. Yeah. Yeah. You've of course been to India so many times, right? And you've had the Rajasthani version of it. How do you compare the two? It's the dough. The bread is a little different. It's a little more flaky. I'm used to it served with dal, but it's great with the chutneys. I love it. It's drier, but it's still very It's really nice. tasty. Yeah. What about you, Dave? Oh, it's really tasty. I really like Have you had anything like this ever? Well, I've had a lot of Indian food over the years, but this is as good as you get. This is really tasty. Especially the green, what do you
call it? The chili green stuff. Yeah, the vegetables. Yeah, the vegetables. But it's also very easy to make. So they come back after a long day's work, and it's just so easy. You just roll Very these quick. balls, stuff in it, Right. and it's cooked within 5 minutes. Yeah, and very filling. Yes, yes. I feel So like it's a quick meal. two of these It's are very nourishing, Yeah. and there's a lot of fiber in it, Yeah. Right. and it's nice. It stays in the stomach for a long time. Yeah. बाट 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 वाह ही वाह अजूबा खेल अजूबा प्रोग्राम का टिकट बाट बुकिंग मास्टर और कहे भैया देखने वाले बाहर में सोचा बिचारी इंतजारी मत करेंगे ना जिंदगी का फिक्र करेगी ना ही मांग करे और जब तक चलाएगी तब तक हैंडल को छोड़कर अब कहाँ रोड में नहीं. Powered up by the roadside feast, I decide to visit the Maut Ka Kuan, or the Well of Death. As the name suggests, this place is not for the faint-hearted. I say this because you can actually feel the adrenaline buzz of this place as the bikers rev up their engines and the show begins. This is the most extreme form of sport that I've ever seen in my life. I don't know what the trick is, but it's genuinely surprising and shocking how these people can go around leaving the handles of their bikes and the steering wheel of the car. It's just too good to be true. संतराज, ये बताओ, ये काम करने में डर नहीं लगता है? जी बिल्कुल, पहली बार में डर लगता था। पहली बार कैसा लगा था जब किया था? पहली बार तो इसमें सीखने जब आए तो 1-2 बार गिरे तो डर न लगने लगा। हाँ। तो फिर तीसरा बार में ट्राई किए तो चक्कर आता था, चक्कर टूट गया। चक्कर टूटने के बाद फिर धीरे धीरे हिम्मत बना, उसके बाद भाई जो चलाने लगा। ये जो बैलेंस बनाते हो, वो कैसे बनाते हो बैलेंस, ताकि दीवार पे चिपके रहो, गिरो नहीं वहाँ से दीवार पे जी स्पीड का मात्रा इसमें ज़्यादा रहता है। स्पीड कितना स्पीड पे रहते हो? ये जी 50 का स्पीड रहता है। 50 कि 50? 40-50 रहता है, नहीं ऊपर नहीं रहता। वो स्पीड का मात्रा में पकड़ बनाया हुआ रहता है और इसी कारण चलता है। Over the years, the Sonepur Mela has gained itself a somewhat dodgy reputation with its theatre scene. Now, the theatre scene here is actually more song and dance. But it's a kind of dance that most respectable people would like to avoid. But I'm awfully curious and I don't intend to hide it. क्या सर, क्या देख रहे हैं? ये इसके बारे में काफी सुना है मैंने, मशहूर है यहाँ का चांदी। सोनपुर मेला का सोनपुर मेला में बहुत प्रसिद्ध ये थिएटर लगता है यहाँ। मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है। अच्छा, मैंने सुना बहुत है इसके बारे में, लेकिन देखा कभी नहीं है, तो मैं देखना चाहूँगा। देखने के लिए इसमें टिकट लगता है। आपको देखना है ये? हाँ। तो यहाँ टिकट लगता है, 500 का है, 200 का है, 300 का है, 80 रुपये का है। क्या कैटेगरीज है? 500 का कहाँ बैठने को मिलेगा? 500 का सबसे आगे एकदम स्टेज के नज़दीक आप सट के बैठ सकते हैं। उसके पीछे 300 में है, उसके पीछे 200 में है, और 80 रुपये का जो टिकट होता है वो एकदम सबसे पीछे, वो ज़मीन में चट उट बिछा के वहाँ लोग को बिठाया जाता है। देखना चाहूँगा मैं। Once inside, I'm told by the owner of Chandni Theatre that his place is named after his star attraction, who's also called Chandni. It's curious that he calls all his dancers artists, which they may well be, but looking at their routine on stage, one doesn't quite see the art in it. But who am I to judge? By the looks of it, it seems no one really has a problem, as long as the dance theatres don't become a law and order situation. And so, having seen and heard Sonepur Mela's evening attraction, I decide
to quietly slip out midway. अब समझ में आया क्यों इतना पॉपुलर है ये सोनपुर का डांस यहाँ पे. I've just come out of an amazing performance here inside Chandni Theatre. But there's a chicken and egg story about this. I don't know whether this has inspired Bollywood or Bollywood is inspired by this. The folks inside tell me that the story of Bollywood has been played here year after year, and it is Bollywood that has copied the dance moves which we just saw inside. It's not just the theatres that come alive at night. As far as entertainments go, you're seriously spoiled for choice. And so, having had a great time in Sonepur, I make a beeline for the giant wheel, from where I can have one last good look at the oldest and the largest animal fair of the country. एक अच्छा मेला के खूबी ई होला कि लोग ओकरा में मजा करे और ई मेला में उ सब खूबी बा. आशा बा रउआ लोग के ई एपिसोड अच्छा लागल होई. The essence of a good mela is that it has fun and entertainment for all those who come to see it. We've tried to capture the fun and entertainment of the Sonepur Mela for you in this episode, and we hope you liked it as much as we did in the making of it. So until the next episode, this is me, Dhiraj Singh, saying thanks for watching. Namaskar. Woo!